Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's start with Fluid Mechanics DPP 3, and in this we have 11th question from H.C. Verma. And as you can see, a metal piece of mass 160 gram lies in equilibrium inside a glass of water. The piece touches the bottom of glass at small number of points. If the density of metal is given, find the normal force exerted by bottom of the glass on the metal piece. Okay, so over here, as you can see, as the stone touches the surface at small number of time, indicates what? There is a water inside that, right? Indicates there is a pressure difference. Whenever there is a pressure difference, we have what is called as the buoyant force. So if I just draw, अगर मैंने free body diagram draw किया, तो क्या हो जाएगा? Buoyant force will act in the upward direction. Then we have mg, which will act in the downward direction, and the normal force, which will act in the upward direction. So as you can see, buoyant force plus normal, the buoyant force plus normal will be equal to mass into acceleration due to gravity. Buoyant force plus normal will be equal to buoyant mass into acceleration due to gravity. So this is the first equation we have, and the normal force you can write it as mg minus the buoyant force, है ना? तो यहाँ से आप देख सकते हो what is the mass. Mass is given 160 gram, so we can write it as 160 into 10 to the power minus 3 into g is 10 minus what will be the buoyant force. Buoyant force is density density of the water. And what is the density of the water? Density of the water we have is 10 to the power 3, that is 1000, into the volume displaced. Volume displaced we can write it as the total volume of a cube given, and that will be 160 into 10 to the power minus 3 divided by 8000 into the acceleration due to gravity, and that is 10. So I hope this is clear. Buoyant force is always equal to the density of the liquid in which the given object is immersed into volume displaced into acceleration due to gravity. This you need to remember, ठीक है ना? ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. 160 into 10 power minus 3 into 10 will become 1.6 minus this is 1000, this is 8000, so it will become what is called as 20 into 10 to the power minus 2. And if you just calculate this, you will get 1.6 minus 0.2, and that is 1.4 Newton. तो ये हो गया आपका आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. सो ऑल द क्वेश्चंस वॉट एवर आई एम टेकिंग ओवर हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फ्लूइड डायनामिक्स बहुत अच्छे से करना है तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. ठीक है. तो देखो अब 12th क्वेश्चन. अ फेरी बोट हैज इंटरनल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एंड वेट गिवन 50 kg. एक बोट दी है. सो दिस इज द बोट सपोज टू बी, एंड इसका जो वॉल्यूम दिया है, इंटरनल वॉल्यूम, वो दिया है 1 मीटर क्यूब. ठीक है. और इसका जो वेट है वो 50 kg, मतलब इसका जो मास है वो 50 kg दिया है. नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ वुड, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बोट इमर्स्ड इन द वाटर. मतलब हमको निकालना है कि कितने परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम का, राइट, कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम का इनसाइड द वाटर है. ठीक है. तो वो निकाल लेते हैं अपन. मतलब जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम विल गिव यू द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द वाटर. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है 50g को बैलेंस कर रहा है buoyant force, है ना? तभी तो वो फ्लोट हो सकती है वाटर पे, है ना? तो buoyant force is balancing what is called as the mg. तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन b is equal to 50 into g. What is buoyant force? It is the density of the liquid, that is 10 to the power 3 into volume displaced, vd, into g is equal to 50g. So this g get cancelled. Volume displaced we have is 50 divided by 1000, and that is equal to 1 divided by 20. So this is the volume displaced we have in meter cube supposed to be. We want fraction of volume, so you can write fraction
of volume inside the water is equal to volume displaced by the total volume. Volume displaced is 1 by 20 and divided by total volume is 1 meter cube. तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1 by 20. So this is the answer for the first question. में क्या दिया है, सेकंड बीट में क्या दिया है, if a leak develops in the bottom and water starts coming in, what fraction of boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides. मतलब कि अगर यहाँ पर एक बोट है और थोड़ा सा लीक हो गया फ्रॉम द बॉटम, तो वाटर क्या होगा, इसमें आना स्टार्ट करेगा. तो कितना परसेंटेज और कितना वॉल्यूम इसमें फील होना चाहिए सो दैट जो वाटर है वो कहाँ से आ जाए, वो साइड से आ जाए. ठीक है ना. तो देखो यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए. ठीक है. तो देखो अब इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं जो वेट ऑफ द बोट है वो कौन ले रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, इट इज द बॉयंट फोर्स. अब बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू mg तो लिखना ही पड़ेगा हमको. बॉयंट फोर्स क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज 10 to the power 3 इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस. अब वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है, देखो जितना वॉल्यूम इनसाइड द बोट आया और टोटल वॉल्यूम जो 1 है, सो 1 माइनस इनसाइड द बोट वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम डिस्प्लेस मिल जाएगा. सो 1 माइनस inside volume of water will give you the volume displaced into the acceleration due to gravity is g, which is equal to 50 into g. So ag get cancelled. 1 minus inside volume is equal to 50 divided by 1000, you will get 1 by 20. So we have, and that is 1 minus 1 by 20, which is 19 divided by 20 meter cube. So I hope this is clear. सो ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. अब देखो 13th क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर हैज टू सपोर्ट अ मेटल पीस वेइंग 0.5 kg. व्हाट कैन बी द मिनिमम एज ऑफ द ब्लॉक सो दैट इट डज नॉट सिंक इन वाटर. एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, इट हैज टू सपोर्ट व्हाट इज कॉल्ड एज द 0.5 kg वाला ब्लॉक. सो अगर इसको हमको मतलब ये सिंक ना हो ऐसा अगर चाहिए तो हमको मिनिमम एज कितना चाहिए इसका, मतलब इसका लेंथ कितना चाहिए, L सपोज टू बी, सो दैट इट विल नॉट सिंक. तो देखो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा इसका जो वेट है, मास ऑफ द आइस प्लस ये 0.5 kg into the acceleration due to gravity is balanced by what is called as the buoyant force. तो buoyant force क्या लिखेंगे अपन, buoyant force लिखेंगे it is the density of the liquid that is 1 into the acceleration due to gravity. Density हम लिखते हैं in SI because everything we wrote in SI. So 10 to the power 3 into the volume displaced is the volume of a ice cube we can say, into acceleration due to gravity is g is equal to this is the buoyant force is equal to mass of the ice we can write, and that is the density into volume. Density is given, that is 0.9 into 10 to the power 3 into volume we have is L cube plus 0.5 into g. ये g cancel. तो आप देख सकते हो यहाँ पर it will be we have 10 to the power 3 in bracket, this is 0.1 L cube is equal to 0.5. तो यहाँ से L cube is equal to this is 0.5 divided by this is 10 to the power 2, which is equal to 0.005. So L is equal to cube root of 0.005. अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अगर क्यूब रूट निकालोगे, then you will get approximately equal to 17 सेंटीमीटर. ठीक है. तो आपको जो ब्लॉक का जो लेंथ चाहिए, जो ब्लॉक का आपको एज चाहिए, वो कितना चाहिए, 17 सेंटीमीटर. सो आई होप दिस इज क्लियर. In this question, as you can see, a cube of ice floats partly in water and partly in kerosene oil
Find the ratio of volume of ice immersed in water to that in kerosene oil. Specific gravity of kerosene oil is given and that of ice is given. ठीक है, तो हमको निकालना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो वेट है इस ब्लॉक का, आइस ब्लॉक का, वो कौन बैलेंस कर रहा है? बॉयंट फोर्स ड्यू टू द वाटर प्लस बॉयंट फोर्स ड्यू टू द केरोसिन ऑयल. ठीक है ना, बॉयंट फोर्स ड्यू टू द वाटर एंड बॉयंट फोर्स ड्यू टू द केरोसिन ऑयल. तो यहाँ पर देखो, अब buoyant force due to the water plus buoyant force due to the kerosene oil, this balances what is called as the mg. अब buoyant force क्या लिखते हैं अपन? buoyant force लिखते हैं density of the water 1 into volume inside the water into acceleration due to gravity plus buoyant force due to kerosene oil, it is the density of the kerosene oil, that is 0.8 into volume inside the kerosene oil into acceleration due to gravity g, which is equal to the mass we have is density of the ice, which is 0.9 into the volume of ice into acceleration due to gravity g. So this g get cancelled and we have, so we want ratio of volume of ice immersed in water to the volume of ice immersed in kerosene oil. So we have what is called as volume in water plus 0.8 volume in kerosene oil is equal to 0.9 volume of ice. And we know that volume in water plus volume in kerosene oil is equal to the total volume of ice, isn't it? Correct? Now this is the equation number 1 we have, this is the equation number 2. Why I wrote? Because whatever volume in water plus the volume in kerosene oil will give you the total volume of ice now, and that is the reason we have the second equation. Now if you just subtract this, अगर आप इसको subtract करोगे, so you will get this as minus 0.2 volume in kerosene oil is equal to minus 0.1 volume in ice. ठीक है, तो volume in kerosene oil is equal to, this is 1/2 volume in ice. मतलब volume of ice is 2 times the volume of kerosene oil. बस ये यहाँ पर put कर दो और you will get the ratio then. तो volume of water plus volume of kerosene oil is equal to 2 times the volume of kerosene oil. तो यहाँ से आप देख सकते हो volume in water is equal to volume in kerosene oil, indicates therefore volume in water and volume inside the kerosene oil will be equal to 1/1. That is, answer for this question we have is 1:1. 1:1. So I hope this is clear. Right, now this last question, the last question we have, the 15 one. A cubical box is to be constructed with iron sheets 1 millimeter in thickness. ठीक है, one cubical box we have to construct. ठीक है, so that the thickness is given, that is 1 millimeter. तो यहाँ पर जो thickness है वो 1 millimeter है. This is the iron sheet we have. तो ऐसे ही कितनी iron sheet लेनी पड़ेगी हमको? Tell me, how many iron sheets we require to make a cube? It is the 6. Why? Because we have up part, lower part, left, right hand side, left hand side, right? Likewise we need. So this is the length L we have and this is the length L we have. अगर क्यूब बनाना है, क्यूबिकल बॉक्स बनाना है, तो हमको क्या चाहिए? इट इज़ अ स्क्वायर प्लेट चाहिए, है ना? स्क्वायर प्लेट, थिकनेस इज गिवन 1 मिलीमीटर, वेरी स्मॉल. ठीक है, तो इसका अगर हमको वॉल्यूम चाहिए, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब you can write it as 6 times L squared into 1 millimeter indicates 10 to the power -1 centimeter cube. ठीक है,
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.6 L स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये वॉल्यूम हो गया क्यूब का, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एज, तो हमको एक्सटर्नल एज चाहिए, तो ऐसे एक्सटर्नल एज कितना होना चाहिए, मतलब एल की वैल्यू ही कितनी होनी चाहिए, सो दैट इट विल नॉट सिंक, ठीक है ना, इट विल नॉट सिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एम जी इज बैलेंस बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम जी। तो बॉयंट फोर्स देखो क्या होगा, बॉयंट फोर्स होगा हमारा, एंड दैट इज डेंसिटी of the density of the water, right, and that is given 10 to the power 3. So I am writing 1, why, because everything we are taking in CGS. 1 into volume displaced we have, and that is equal to L cube we can write, because see, this is L, and this is also L, right? So length, breadth and width also it is equal to L. So L cube into G is equal to mass we can write, and that is equal to density of the iron, and that is 8 into volume of a cube, which is 0.6 into L squared into G. तो अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, सो एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू यू विल गेट this is 4.8 centimeter. So I hope this is clear. So minimum length, minimum width that cube must have, minimum edge, external edge that cube must have is 4.8 centimeter. तभी वो क्या होगा, float होगा on the surface of water, ठीक है। So this is it then. In the next video I'll take more 5 questions from HC Verma. Right, likewise there are 35 questions. I'll cover each and every question plus objective also. Now if anyone has any doubt, they can always comment in the comment box. I'll try to reply to your comment as soon as possible. Thank you so much.